ତମ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଶୋ କରୁଛି ନା ବାବୁ ଦେଖିଲ ଟିକେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଶୋ କରିଯାଉଛି ନା? ଶୋ କରୁଛି। ଅ, କଥା ଉଠୁଛି ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଯୋଉ ଯାଇଥିଲେ କେତେ ବାଟ ଯାଇଥିଲେ ଆମେ ଟିକେ ସିଲାବସ୍ ଟାକୁ ଦେଖିଦବା ପ୍ଲସ୍ ଏମସିକ୍ୟୁ ଅଛି ଡିସ୍କସନ କରିଦବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଖକୁ ସାର୍ ରହିଛି କୋଉଠି ସିଲାବସ୍ ମୁଁ ତମକୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଦେବି ଦେଖ ସେ ଅନୁସାରେ କୁଆଡେ ଯାଇଛି ତ ଜଣେ ମ୍ୟାଡାମ ଜଣେ ନୂଆ ମ୍ୟାଡାମ ଆଜି ଡେମୋ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରନ୍ତି 7ଟା ବେଳେ ମୁଁ ତମକୁ ମଝିରେ ମେସେଜ କରିବି ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ସେ ବସିବେ ବୋଧେ ତ ମୋର ସିଲାବସରେ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ବି ଯୋଡା ହଉଛି ଅଛି ହେଲା ବଟ୍ ସେଟା ସେପାରେଟ ବୁକ୍ସ ଅଛି ତା ପାଇଁ ମୁଁ ସିଲାବସ ଏଠି ରଖି ନାହିଁ ପ୍ଲସ୍ ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏନସିଏଣ୍ଟ ମିଡିଆଭାଲ ପ୍ଲସ୍ ମଡର୍ନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଠି ରଖି ନାହିଁ ହେଲା। ତ ଆଇ ଥିଙ୍କ ସେଟା ପଢା ହେଇନଥିବ ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଭର କରିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଟିକେ ଭାଷ୍ଟ ସିଲାବସ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି କାରଣ ଆମର ଏନସିଏଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମିଡିଆଭାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମଡର୍ନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ପୁଣି ତମର ଏନସିଏଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମିଡିଆଭାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମଡର୍ନ ହିଷ୍ଟ୍ରି प्लस ओडिशा आर्ट एंड कल्चर बाकी टेम्पल आर्किटेक्चर ये तमाम प्रकार कथा कोठी ना कोठी हिस्ट्री मध्य पड़े आसी हिस्ट्रीटा ऑटोमेटिक गोटे बड़ सिलेबस बनी जाଉଛି ହେଲା କିଛି वरी हवार आवश्यकता नहीं सिलेबस को धरिकी आम यदि चलवा ताको आराम से इजीली कवर कर परिबा बाकी प्रैक्टिस द्वारा खाली की प्रैक्टिस द्वारा तुम एट द एंड समराइज करियो ना सिलेबस को लास्ट रे सब पढ़ी सारिकी त लिखिबो समराइज करिवो से जिंस भी तुमरो स्क्वीज हे जिवो कि छोट हे जिवो बड़ कथा नहीं ज्योग्राफी भी सेमती बड़ सिलेबस ताकू पढ़ी सारिकी लेखा लेखी कर सारिकी प्रैक्टिस कर सारिबो तापर लागो नहीं सिलेबस मो कंट्रोल ले अछि स्टार्टिंग जेतल देखियो तुमको बहुत सारा हेवी हेवी लागियो सेटा समस्त सहित हुए पढ़ी हबार आवश्यकता नहीं सिलेबस को कंट्रोल केतल हबो पूरा पढ़ी सारा पर पूरा रिवीजन कर सारा पर लेखा लेखी प्रैक्टिस सिलेबस सब कंट्रोल को आसे एनी हाउ देखियो एक्चुअली एंशिएंट हिस्ट्री तुम कौन कौन अच्छी मोर यू नो प्री हिस्ट्रिक एंड प्रोटो हिस्ट्रिक पीरियड अच्छी sources of the ancient history जोटा कि literal archaeological you know demonstrative then stone age कथा कहूँ paleolithic mesolithic neolithic chalcolithic culture in India Harappan और Indus Valley civilization अच्छी origin extent feature decline ମଧ୍ୟ तार अच्छी है Indus Valley IVC then ଆମର ଅଛି Vedic period ଅଛି early Vedic later Vedic political social economical religious development महाजनपदा religious reform movement rise of the महाजनपदा and kingdom को rise of the Jainism, Buddhism, religious doctrine and the spread. ये तुम्हारा ancient ରେ ଆସୁଛି ମୌर्य post ମୌर्य period ହେଲା ମୌर्यन empire କଥା କହୁଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌर्य to ଅଶୋକା କଥା ମୌर्य administration economy and society ତାଙ୍କ କଥା ଯୋଉ କହା post ମୌर्य kingdom Indo Greeks Sakas Kusanas Gamaes you know Tamil Kam then South India Gangames Gupta post Gupta period पोस्ट गुप्ता रे तमरा अछि गुप्ता पीरियड समुद्रगुप्ता चंद्रगुप्ता ओ गुप्ता अलगा ए गुप्ता अलगा इट इज देन गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन कल्चर एंड साइंस एंड आर्ट पोस्ट गुप्ता डेवलपमेंट रे हर्षवर्धन अल्वा क्या अछि इंडियन कल्चर एंड रिलीजन डेवलपमेंट ऑफ द हिंदुइज्म पुरानिक रिलीजन आर्किटेक्चर स्तूपा केव टेंपल आर्किटेक्ट आर्ट रे अछि हमरा कल्चर एंड पेंटिंग मूर्ति वगैरह education नालंदा यून तक्षशिला लिटरेचर तमाम प्रकार एंशिएंट आसिला मिडाइवल कथा कहबा हमें जो मेन चैप्टर पढ़ा मिडाइवल ले अछि तमन आर्मी यू नो आर्मी मिडाइवल 750 रु 1200 हला राशि यू नो रीजनल किंगडम पाला यू नो प्रतिहारा राष्ट्रकूट चोला चोला एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कल्चर चोला दी थरा आछन बाबूला अरब इन्वेजन कथा कहउची मोहम्मद बिन यू नो कासिम देन दिल्ली सल्तनत कथा कहउची 1206 रु 1530 हालांकि तुम इम्पोर्टान्स मिडियावाल हिस्ट्री रे
कमी जाइए बट स्टिल तुमको पढ़िया को पड़ो। खिलजी डायनेस्टी कथा कहूँ अलाउद्दीन खिलजी तुगलक डायनेस्टी मोहम्मद बिन तुगलक फिरोज शाह शायद एंड लोधी डायनेस्टी एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमी आर्किटेक्चर सोसाइटी अंडर सुल्तान्स एंड रीजनल किंगडम एंड विजयनगर कथा कह विजयनगर एम्पायर कृष्णा देवाराय देन बाहमी किंगडम एंड रीजनल पावर भक्ति एंड सफी मूवमेंट ये बहुत इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन जेहेतु से मुस्लिम रूलर कथा पकाऊ ना भक्ति और सूफी ये मूवमेंट रू क्वेश्चन सेंट कथा कह रामानुज कबीर तुलसीदास मीराबाई चैतन्य सूफी सेंट कथा चिश्ती कथा कहूँ सलाउद्दीन ऑर्डर कथा कहूँ देन मुगल एम्पायर्स कथा कहूँ बाबर टू औरंगजेब मुगल एडमिनिस्ट्रेशन मनसबदारी जागीरदारी मुगल आर्ट आर्किटेक्चर लिटरेचर decline of the Mughals later Mughals and rise of the regional states rise of the Maratha Shivaji and successor the Sikh Jat Rajput and other regional power these are comes under the medieval history of India बाकी तुम मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन तुम अधिक आसूँ बनूँ परीक्षा अधिक बनूँ मॉडर्न then advent of Europeans and the British expansion in India then arrival of the European power Portuguese Dutch French and British Anglo-French rivalry and Carnatic wars British expansions Battle of the Plassey Boxer Auxiliary Alliance Doctrine of the Lapse British administration and policies regulating and Peace India Act Patriot Act Company to Crown transition 1857 land revenue system Zamindari Rautwari Mahalwari and economic impact deindustrialization drain of earth question पकौछ मान इतिहास सब गांधी कथा पकेबे जिन जबरदस्त इकोनॉमिक इम्पैक्ट एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म इन द ब्रिटिश ये दुटा भारी इंपोर्टेंट हम देखिए पचे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म ये भारी इंपोर्टेंट ब्रिटिश ना मॉडर्निस्ट सब इंपोर्टेंट सोशल रिलीजियस रिफॉर्म कथा कहूँ 19th सेंचुरी राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज समाज प्रार्थना समाज अलीगढ़ मूवमेंट सिंह सभा थियोसॉफिकल सोसाइटी तमाम प्रकार अपराइजिंग एंड रिवोल्ट रिवोल्ट 1857 कॉज इवेंट एंड कैजुअलिटी पकाउछि सब जानिछ रिजल्ट देन ट्राइबल पीजेंट एंड सिविल रेबेलियंस राइज ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म है फाउंडेशन ऑफ द आईएनसी मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट होम रूल मूवमेंट रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इंडिया एंड अब्रॉड Gandhian era. Arrival of the Gandhi in the early movement, Champaran and Khera, Ahmedabad mill strike. Non-cooperation movement, civil disobedience movement, Quit India movement, Gandhi heroin pact, roundtable conference. Upper struggle and development कथा को rule of the Subhash Chandra Bose and INA, Indian National Congress, Indian National Army कथा को. And leftist movement, trade union, socialist trade कथा कहूँ rule of women and freedom movement towards the independence. Fifth mission, Bible plan, cabinet mission. ये last time on battle plan, Indian independence act, partition of the India and integrated with the princely. Then come to the princely, post independence consolidation, constitution framing, Nehruvian era, initiation, linguistic, reorganization, state formation. These are the syllabus of the ancient medieval and modern history. But history एतिक सीमित नुह आर्ट एंड कल्चर या भितर अच्छी लाइक आर्ट एंड कल्चर तुमको सिलेबस को स्क्वीज करी हबो बहुत सारा फाइज अधिका स्क्वीज करी हबो ताको कंट्रोल रे रखी हबो इतिहास को टिके अधिका तुम सिलेबस रही छी सेटा प्लस तुम ओडिसा रिलेटेड अच्छी जो तुम एंशिएंट अच्छी ट्रैवल अच्छी मॉडर्न अच्छी ओडिसा आर्ट एंड कल्चर अच्छी ओडिसा फेस्टिवल्स अच्छी ओडिसा टेम्पल आर्किटेक्चर अच्छी ये सब तमाम प्रकार जिनस हिस्ट्री भीतर तुम इनक्लूड हो सिलेबस टी भास्ट अच्छी ठीक अच्छे आम जो सार पढ़ी थे प्रखर सारे कौटार स्टार्ट करते एंशिएंट ना मिडाइवल ना मॉडर्न होनी सार जो तुम स्टार्ट करते कौटा स्टार्ट करते एंशिएंट ना मिडाइवल ना मॉडर्न ये क्लास तारीख वर्ष राणी कहूँ एंशिएंट पढ़ी अच्छा एंशिएंट स्लाइड देखिए कह केत आड़ पर्यंत जाइए
एंशिएंट रे केते पन जाइथिला बाबू देखिले स्लाइड देखा एंशिएंट केते जाइथिला मैडम फास्ट अछि तमर प्री हिस्ट्री के हैं ओटा बुद्धिज्म जैनिज्म ना कोन अच्छा अच्छा पहले एगुड़ा सरी जाइथिबो हला यो तमर स्टोन एज कथा बाकी हरप्पन सिविलाइजेशन सरी थिबो वैदिक पीरियड सरी थिबो तापर जैनिज्म बुद्धिज्म एटी पन जाय नहीं हमें ताले मयूरियन पाखरु स्टार्ट करिया हला चंद्रगुप्त मौर्य अशोका मैं आखिरी पाखरु स्टार्ट करिया नेक्स्ट मौर्य पाखरु तमे एमसीक्यू कर दियो बसरु हमें मयूरिया पीरियड हमें स्टार्ट करिया जोटा कि भलो वो जिनसे देखो इतिहास हबनी पाठ बोर होली तुम इच्छा इंटरेस्ट नहीं कि देखियो इतिहास मजा पाठ किसी ना ठीक अछि अछि जो जिनसे बीती जाई से कथा इतिहास रे मेंशन करा है बट ये हमर सिविलाइजेशन सभ्यता हमर से जिनसे ना केमती हम छड़ी रही परियो गुडा मजेदार कथा मते इतिहास अछि गुडा गुडा जानिया पड़ो जो कहते नहीं इतिहास हमको शिखई गुड़ाए प्रकार युद्ध गुड़ाए प्रकार एक्वायर ऑर्गेनाइजेशन इशू गुड़ाए प्रकार माइंड मैच्योरिटी धीरे धीरे हम तुम एडमिनिस्ट्रेटिव जो हम शासन कर भल भाव में शासन को जो पाठ पाठ पढ़ा बोले से एडमिनिस्ट्रेशन भल हम माइंड तुम स्ट्रंग सब पाठ को पढ़ले जाइए माइंड में रंग आसो चलेनि हम तो आम मयूरिया पीरियड पाखु नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करें बाकी मिडिया किसी ना भारी इजी जिन जल्दी कंप्लीट हम और आवश्यकता बड़ा निश्चय पहुंचे तो मजा आसी चलेनि हम ये कथा नहीं जिन ओके ओके चलो चलो बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन व्हिच ईयर प्लासी युद्ध केबे हेइथिला प्लासी 1857 ना हाँ, बिल्कुल 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 Battle of Plassey was fought between the British East India Company led by the Robert Clive and Sirajudollah of the Bengal. This marked the beginning of the British colonial, political control in India. बिल्कुल इतिहास समस्त पढ़ीच कथा को बुझेबार इतिहास रे बहुत किसी न थाए ज्यादातर इतिहास गोटे जिनस कौन पढ़िया पड़े बारंबार प्रैक्टिस कर इजी कथा लिखाई ओके हु वाज द who was the last viceroy of India at the time of formation of the Indian National Congress? Who was the viceroy, last viceroy? Who was the viceroy of the India at the time of formation of Indian National Congress? Indian National Congress जब formation करा हला 85 एक टाइम रे की थिला तमर viceroy थिला भाई साहब डफरिन वेरी गुड डी के कहला बाबू टीसी डफरिन भाई साहब एएनसी 1885 रे हमर ये थिले डफरिन थिले डफर डफर लोकटा इंडियन नेशनल कांग्रेस बने टाइम रो रह गला है ना से खराब लोग बोली इंडियन नेशनल कांग्रेस को बने लजा फल कि सुविधा हो गला सब इंचा एनसी तो आसी सब इंचा गला ना डफर टा थिला डफरिन पड़ी गला पर डफर गदा देखो रखा भाई कहली the revolt of the 1857 was described as the first war of independence by 1857 को first war of independence कहा द्वारा कॉइन कराया था डिस्क्राइब करा है चलो बीडी सावरकर बीडी सावरकर टर्म in the 1857 revolt in the first war of independence in his book published in 1909 Rautwari system was introduced by Rautwari भाव तुमको मॉडर्न हिस्ट्री रे महलवारी राउतवारी हला इंदरी राउतवारी वारेन हेस्टिंग थॉमस मनरो
पढ़ प्रैक्टिस कले हम किसी कथा नहीं ओरिया आवश्यकता नहीं पच नहीं बारंबार बारंबार एमसीक्यू कले प्राय टाइम रे एमसीक्यू दे देबी जदी क्लास रे डिस्कशन न करिवि पर प्रीलिम्स वेरी इजीली कंप्लीट हो थॉमस मनरो जोटा कि द राउटरी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन द मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी थॉमस मनरो वेयर द रेवेन्यू वाज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द पीजेंट सेटा माने हला डायरेक्ट जेतेले ठारू जो चांदा आदाय कराहब टिकस आदाय राउतवारी बोली कह महलवारी जमीनवारी टिके डिफरेंस which act introduced in the system separate electoral for मुस्लिम मानकर सेपरेट इलेक्टोरल हवा पई को एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट नेके आस्ते पार्लियामेंट रिफॉर्म मैडम को 45 हो मैडम 45 की सुभाषिनी तो नाम रो कोन शुभदर्शिनी शुभदर्शिनी के कहला चलो वेरी गुड पार्लियामेंट रिफॉर्म है सेपरेट इलेक्टोर माने हला अलगा अलगा लोक अलगा अलगा जगह छिड़ा हला कि हमें एटा सब इंपोर्टेंट कथा अछि हम बुझिबा बट हिस्ट्री एक्चुअली जिंसोडा छोटा मोटा कथा एडा को एक्चुअली बुझियाउ टिके पड़े अलगा अलगा लोक छिड़ा हेबे तांकरी जाति भाई लोक तांको वोट देबे जो जते केते बड़ खतरनाक कथा गांधी से बड़ देथिल अपसेट थिले ए कथा को हमरो आको सहित पाक हैला का सहित ना पाक कथा केरा अम्बेडकर से एक्सप्लेनेशन कौन एक्सप्लेनेशन लिखा है 1909 रिफॉर्म आल्सो कॉल्ड द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 introduced the separate electoral for the Muslim for the first separate electorate. Who among the following started newspaper Kesari? लाल लाजपत राय लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक तिलक जी है तिलक जी स्टार्ट करते केसरी लाला लाजपत राय पंजाब बाल गंगाधर तिलक मुंबई गणेश पूजा स्टार्ट करते एरिया अनुसार ना आंसर मन रख केसरी तिलक स्टार्टेड बाल गंगाधर तिलक स्टार्टेड केसरी इन द मराठी spread the nationalism मराठी आश्चर्य ना से मराठी केसरी एरिया अनुसार जगह अनुसार लोक नाम मन रखे मन रही टाइमिंग ए दिना जिंस जालियाना बाग मैसाकर occur in which year इजी क्वेश्चन है जे कहला ता पय ता जे पय ता ही जोता 1919 दीटा जालियाना बाग बड़ कथाटा ना डबल हे गला सिटी 1919 है मैसाकर माने जाय छ ऑलरेडी संघ मैसाकर टुक्स प्लेस इन द 13 अप्रैल 1919 पैसा कितला जे दिन जाबले जनरल डायर बस खत्म हो गोली चलेगा ओडिशा रे रक्त तीर्थ का कुआ होछ जोला उडे हित लागे हां राजपुर लोग कह देवा कथा करे चलो the drain of wealth theory was given by दादा भाई नारोजी दादा भाई नारोजी है ड्रेन ऑफ वेल्थ माने कोन हमर जो ब्रिटिशर माने आसी की नै जोचन संपत्ति पहला से कथा दादा भाई नारोजी explained the economic exploitation of British through the famous theory in his book Poverty and Un-British Rule in India बेटा मन रखते हैं बेटा Poverty and Un-British Rule in India बुक्स टा मन who was the first Indian to be elected in the British Parliament वाला क्वेश्चन हां बस दादा भाई नारोजी मन रखते सब प्रकार कथा ही जीव ना चलो ना सत He was elected the British Parliament 1892 as the Liberal Party member बुझ पड़ तो उस समय शासन करते बट एठी लोग जाई ब्रिटिश रे मेंबर पार्लियामेंट कथा को स्वदेशी मूवमेंट वाज डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट स्वदेशी मूवमेंट कौन पे बनिला स्वदेशी निजे बंगाल 1905 हां परफेक्ट मोर स्वभाव
The Swadeshi movement started in the protest against the partition of Bengal. ହେଲା ନଣୀ ମନାଦି ଗାଇବା ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଇଚାରା ଲୁହ କାନ୍ଦ କଟା ଗୋଟେ partition ଛାଡ଼ିକି ଯିବାନି ଯିବାନି ବଗେରା ବଗେରା କଥା ବଟ୍ ତାହେଲେ ମୁସ୍କିଲ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। The doctrine of the lapse was introduced by the question ଅଛି Lord Dalhousie. Doctrine of the lapse was introduced the Lord Dalhousie କ'ଣ annexed princely state with the natural heir ଯଦି ତାଙ୍କ ନିଜ ରକ୍ତର କେହି ସମ୍ପର୍କ ନାହାନ୍ତି ଭାଇ ସାହେବ ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଅ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଅଛି ସେମିତି Doctrine of the lapse ସମ୍ବଲପୁର Capital of the British India was shifted from Calcutta to Delhi in 1930 ନୁହେଁ ଆଉ ଲଗାଅ କୋଡ଼ିଏ ଲଗାଅ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ କଥା ଆହୁରି ଆଗରୁ ପଳେଇଥିଲା 11 କାରଣ ଏଠି ଆମର ସେପଟେ ହେଲେ ବାବୁ କାଲକାଟାର ସବୁ ମେନ୍ ଲୋକ ଥିଲେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଯୋଉଟା କହୁଛ ଏସବୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ରିଟିଶର ମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ ବେଶୀ କରାହେଲା କାଲକାଟାରେ ସେ ସିଧୁ କହିଲେ ଭାଇ ସାହେବ ଏଠି ଆଉ ରହିହବନି ବେଙ୍ଗଲୁ କାହିଁ ପାର୍ଟିସନ କଲେ ତ କାମ ନଥିଲା ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ କାମ ହେଲା ତା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନଥିଲେ ତମ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଲେ ଡିଭାଇଡ ରୁଲ ପଲିସି ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ଡିଭାଇଡ ରୁଲ କରିଦେଲେ ବଟ୍ ତାପରେ ତ ବସ୍ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ବଗେରା ବଗେରା କଥା 2011 କ'ଣ ହେଲା ପୁଣି ଇଏ ହେଇଗଲା ପାର୍ଟିସନ ହଟିଗଲା ପୁଣି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ପୁଣି ଆସି ଗଲେ ଲାଗିଲେ ବାସ୍ ସେଇଠି ଗଲା ଆମର କହିଲା ଭାଇ ସାହେବ ଏଠି ଆଉ ରହିହବନି ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲ ନା କ'ଣ କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଫ୍ଟ କର ସେଥିପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପଳେଇଲେ ଏଠୁ ଉଠିକି First session of the Indian National Congress was held at জি মার্কেট আছে না ହେଲା ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ତେଜପାଲ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ କଲେଜ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ଆମର କ'ଣ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେସନ ଅଫ ଦ INC Indian National Congress held at the Gokul Das Tejpal Sanskrit College in the Bombay December 1885 under the WC Banerjee କ'ଣ କଲେ କ'ଣ ଏଇଟା ତ ଇଜି ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ଭାବ ଇଜି ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ବା ସାଇମନ୍ ଗो ବ୍ୟାକ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ସାଇମନ୍ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ତମେ ଆସିଛ ଆମ ଉପରେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ କେହି ଭାରତୀୟ ନାହାନ୍ତି କେମିତି ହେଇପାରିବ କଥା ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ରହିଲେ ସିନା ଭାରତୀୟ କଥା ବୁଝିବେ ତମେ ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ସବୁ ଆସିକି ଭାରତୀୟ ଉପରେ କ'ଣ ତମେ ବୁଝାବୁଝି କରିବ ସାଇମନ୍ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେୟାର ଇଟ୍ ନୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେମ୍ବର ଭାରତୀୟ ମେମ୍ବର କିଏ ନଥିଲେ ସେଇ ଗୋରା ଲୋକ 1937 ସାଇମନ୍ କମିଶନ ୱାଜ୍ ଆନ୍ ଅଲ୍ ବ୍ରିଟିଶ କମିଶନ ୱିଥ୍ ନୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ କ'ଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ ये वाला क्वेश्चन टा होम रूल लीग वाज स्टार्टेड बाय क्वेश्चन पकोज पर अब डिटेल्स में पढ़ा है टिके एगुडा क्लारिटी और इतिहास कथा मन रखा बेस्ट टाइमिंग फ्रेम को माइंड रखिबो अदरवाइज नले रखिबो एनिमेशन है तिलक ये ऑल इंडिया किए करथिला तिलक कोठी करथिला एनिमेशन केमिति कोन टिके थ्योरी करले एक्स्ट्रा पढ़ा Bal Gangadhar Tilak and animation started the Home Rule movement 1916 demanding the self-government. Animation the विषय रे Gandhi launched a non-cooperation movement. Non-cooperation movement. 1920 sir. Movement was launched in 1920 in the response to the Jallianwala Bagh.
19 ରେ ହେଲା 1920 ରେ एठी स्टार्ट ହେଲା टाइमिंग गुडा मन रखिले ना एगुडा मन रहबो सेमिति घुसिले मन रहबनी कोन पई स्टार्ट ହେଲା सेटा केबे हितला तो अलगा रिलेशन कोन अछि ना माइंड मैप बने से पढ़ाले जेकोन सब्जेक्ट रे माइंड मैप कले कनेक्शन करियो कनेक्शन कर तुम परीक्षा लिखिया पे सुविधा मन रखिया पे सुविधा बुले पकेला मतलब ताको तमे क्रिटिकली एनालाइज करी मतलब क्वेश्चन लिखि पे सब सब्जेक्ट से माइंड मैप movement was launched in 1920 in the response to the Jallianwala Bagh massacre and the Khilafat issue. Khilafat movement चलता जो दीपा धरती का था civil disobedience movement began with सत्याग्रह Dandi March. And Gandhi began in the civil disobedience movement in the Dandi March and in the March 1930 to break the salt law. जिनसे कथा आछी डांडी मार्च और सॉल्ट सत्याग्रह डांडी मार्च टा who was the founder of the servant of the Indian society servant of Indian society ର founder क्वेश्चन पकोई परी छड़ी जाउ गोपाल कृष्ण गोखले ऑलरेडी किए जाने जगह लगे गोपाल हाँ गोखले founded the servant of the Indian society 1905 to train the people to social work promote the nationality को करिया पे एक ले संस्थान हल्ला cabinet mission came to India in which year cabinet mission plan चला भाई जल्दी चलो चली चलो 1946. cabinet mission came to the March 1946 discussed the transfer of the power that is the end framing the constitution भारत जनता काम से करिए स्लोगन डू और डाई गिवन बाय गांधी ड्यूरिंग उस समय रे गांधी कहते डू और डाई करवा मर टाइम रे क्विट इंडिया मूवमेंट वेरी गुड गांधी गेव द स्लोगन डू और डाई ड्यूरिंग द एटा प्रैक्टिस कर धीरे धीरे सेटा आपे आपे ही जो मन रही जो आवश्यकता हो जाएगी तो इसे तो कनेक्शन कर लेना Gandhi gave the slogan "Do or die" during the Quit India movement. Quit India. क्या वाटा? Do or die. छुट्टिया वाटा. तो बस. Movement launched the August 8 1942. चंपारण सत्याग्रह 1917 was related to चंपारण. हाँ चंपारण का कोड बाबू. बिहार. Champaran Satyagraha was Gandhi's first civil disobedience movement launched in against the forced indigo cultivation in the British. Nikatya. Pune Pact was signed in India. उस समय Pune Pact गांधी और अम्बेडकर Pune Pact was signed between the B.R. Ambedkar and Mahatma Gandhi in 1932 to provide the separate electoral for the repressed class within the joint electoral framework. तो सेपरेट इलेक्टोरल बाकी ये जो पुना पाक्ट है या भीतर डिफरेंस अछि गांधी कहले कि भाई साहब तू कौन चाहू छु अम्बेडकर तू चाहू छु कौन एक्चुअली तो बर्बाद हे जो बुझु छु तो मनर कथा कि तते पानी पियो के देई नथिला कि जहां भी कथा हो डिप्रेस क्लास थिला ଆମେ ସେମିତି କରିବାନି ଅଲଗା ୱେରେ ତାକୁ ସଲ୍ୟୁସନ ବାହାର କରିବା କିଛି ସିଟ୍ ରିଜର୍ଭ କରିଦେବା ପୁରା ଏଇ ଏରିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଣେ ଏସସି ପିଲା ଛିଡ଼ା ହବ ନହେଲେ ଏସଟି ପିଲା ଛିଡ଼ା ହବ ୟା ଫିର ଏସଟି ମହିଳା ଛିଡ଼ା ହବ ତାକୁ ଏସଟି ଦେବେ ଏସସି ଦେବେ ମୁସଲିମ ଦେବେ ବାକି ହିନ୍ଦୁମାନେ ବି ଦେବେ ଏଇଭଳିଆ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ଆମ୍ବେଦକର କ'ଣ କହୁଥିଲେ ସେପାରେଟ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ ତାମାନେ ମୁସଲିମ ମାନେ ହିଁ ମୁସଲିମକୁ ଭୋଟ ଦେବେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ହିଁ ହିନ୍ଦୁ ଭୋଟକୁ ଦେବେ ଏଭଳିଆ କଥା ସବୁ କାମ କଲି ମୁଁ ଶେଷରେ ଏ କଥା ବୁଝିଲି ତ ହେଇନି who gave the slogan Swaraj is my birthright and I shall have it. Bal Gangadhar Tilak.
बिल्कुल बाबू है तिलक बाबू भारी स्ट्रांग लोक है पाल 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 पूरा extremist. Tilak gave the slogan during the extremist phase of the national movement and inspired the self-rule. Who established All India Harijan Sangha? All India Harijan Sangha. Harijan Sangha. Gandhi यार हाँ सलमान खान भूली हो जोगी में है गांधी वाले इंडिया सलमान खान बड़ा बॉर्डर नहीं चल ले भाई साहब Gandhi established the All India Harijan Sangha 1932 to work for the upliftment of the untouchable. पांच हुआ till 17 मिला था स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद was given by भगत सिंह ये इजी क्वेश्चन भगत सिंह हाँ स्लोगन मीनिंग द लॉन्ग लाइफ रिवॉल्यूशन देखो भाई साहब तुम तो ब्रिटिशर न जाइछन्ते पढ़ते रहो आगे भगत सिंह छोटे पिलाटा भारी साहसी पिलाटा थिला तन्ना काम करथिला was popularized by the Bhagat Singh during the India struggle for the freedom. Gandhi Heroin Pact कथा कहउछि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गांधी हीरोइन पैक्ट नमरा केबे हितले 1931 very good Gandhi Heroin Pact 1931 no leading the suspension of the civil disobedience movement in the Gandhi partition in the second round table conference civil disobedience बंद करिवा सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे बाकी फर्स्ट थर्ड आउ कलेन केबे सेकंड ता जासलानी बस ता नहला ये भाई सब नहीं कहे ଜାଣିଥିଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ନାହିଁ ମାନେ ଆଉ କିଏ ରହିଛି ମତଲବ ନାହିଁ ହୁ ଲେଡ୍ ଦ ସଲ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଇନ୍ ତାମିଲନାଡୁ ମୁଁ ପକଉଛି ଭାଇ ସାହେବ ତାମିଲନାଡୁରେ ସଲ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ କିଏ ଲିଡ୍ କରେ ମାନେ ନାହିଁ ଆଜାଦୀ ଆଜାଦୀ ଇଏ କରିଥିଲେ no C Gopalachari led by the salt march Tiruchirappalli to the Kedarmali April 1902 telling Gandhi Dandi march है ना C Rajagopalachari the Ilbert Bill controversy during the Lord Ripon time was related to Ilbert Bill controversy है ना Ilbert Bill controversy कथा आस्तेला जडिशियल पावर बा इंडियन जजेस माने फॉरेनर गोरा लोकर जज करि परिबे एटा को उपकार कथा भाई मृत्यु दंड दिया हो ना ए अधिका दंड दे देबे मझर ये कला लोकन पाखर से गोरा लोक कोन मानबे ए सब कथा थेला Hilbert Bill 1883 sought to allow the Indian judges entry the European offenders which led to the intense opposition from the British in India एमती भाव ये इंडिया लोक ही ब्रिटिश लोक who among the following founded the forward block easy who founded the forward block 1939 after the resigning from the congress due to ideological difference between Gandhi and Nehru के मारुची गाल देखि दियो सुभाष चंद्र कौन बाबू गाल माइला था दीटा गाल जेमती जाबड़ा लगा से आसीबन जिंदगी अनै बनी होला राइट समस्त समस्त ठीक कंट्रोवर्सी अछि बहुत सारा कथा है बट मु मझे रहियार अछि एकदम पूरा अधिका फिलोसोफर हबार नै परीक्षा रे लिखिया पई दिमाग लगे काम बाहर कर दार अछि मार्क देता कथा अधिका दिमाग लगेले सेटा कोन हो Which roundtable conference was attended by the Mahatma Gandhi? Koile Gandhi attended only the second roundtable conference 1931, all the representative of the Indian National Congress. Term
ड्रेन ऑफ वेल्थ वाज यूज्ड बाय एठी लिखा है ध्यान से आशी दत्ता इलाबोरेटेड द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया इलाबोरेट करथिले मीनिंग कोन एक्चुअली ड्रेन ऑफ वेल्थ आशी दत्ता अंडर द ब्रिटिश रूल concept of the drain of wealth in his writing तो लेखा माध्यमରେ इलाबोरेट करथिले दत्ता to the original idea from the दादाभाई नारोजी तांगर ओरिजिनल आइडिया था ड्रेन ऑफ वेल्थ ताको इलाबोरेट कर लोक बुझे ଦେଇଥିଲେ कि भाई साहब ड्रेन ऑफ वेल्थ माने एया संपत्ति लॉटरी में किसी बनौछन led the खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया पता था बाहर लगी कोई दियो हाँ नहीं अली ब्रदर्स आंसर बाहर जाइए अली ब्रदर्स ब्रदर शौकत अली एंड मोहम्मद अली ଦି ଜଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସେ ଟର୍କିରେ ଚାଲିଥିଲା କଥା ତାଙ୍କର known as the Ali brothers led by the Khilafat movement protest the dismemberment of the Ottoman Caliphate World War II ଆମର ମିଶି ବର୍ଦୁଳି ବାଲା ପକେଇଥିଲା ପରୀକ୍ଷା ଏଇଥିରେ କି ପୂର୍ବ ଥର ପକେଇଥିଲା ଭାଇ ବର୍ଦୁଳି 1928 led by କି आयरन मैन पटेल भाई साहब पटेल बर्दुली सत्याग्रह मन रखो भाई बर्दुली मूवमेंट अगेंस्ट द इंक्रीज द लैंड रेवेन्यू वाज लेड बाय सरदार पटेल अर्निंग इन द टाइटल सरदार सेठी जो सेटा को भल से मैनेज करथिले सेठु तांगा ना पड़ला सरदार बोली सरदार पटेल सरदार नहीं से सरदार अछि काम पंजाबी को कौन सरदार The Indian National Army was formed in Indian National Army. Indian National Army was formed by the Mohan Singh in the 1942. Important मन रखो एटा मोहन सिंह 1940 चंद्र बोस लिखिबे जे पटेल. Later revived and led by Subhash Chandra Bose in 1940. Fight British rule, the Japanese support. Also, अच्छी जानती हो ऑलरेडी जिनसे कथा मोहन सिंह कथा मन रखो तो लेट करके करने वालों को डिफरेंस बट डिफरेंस तो कुछ इसका तो नंबर उनको एकदम को देखियो 15 दिन पर आउथ देखियो हिंदी 260 क्वेश्चन हमें जल्दी कर देथिबा प्रीलिम तुमको आपे को which event promoted Gandhi to withdraw non-cooperation movement? After violent crash in the Chori Chora 1992, where the police station was burnt, Gandhi called up the movement mandatory principle non-violence. The principle of non-violence movement. गांधी मजबूरी का नाम in which year did British Parliament pass the Government of India Act which gave the provincial autonomy? Provincial autonomy is what? कबे 1935 provincial autonomy माने तुम्हारा स्टेट मानू को कि मैं तुम्हारा प्रिंसली स्टेट आपको सब पावर दिया Government of India Act 1935 introduced the provincial autonomy and proposed the all India federation. The provincial माने तुम province जो रहबो राज्य रहबो जोटा कथा autonomy. Slogan Jai Hind was popularized by Jai Hind. Jai Hind was adopted a national slogan by the Subhash Chandra Bose in Indian National Army INA. Who wrote Hindi Swaraj? Gandhi
Gandhi wrote Hindi Swaraj in 1909 to outline his vision India's self-rule based on the non-violence and moral value. World level. Non-violence and moral value. Moral value कौन already तुमने पढ़ चुके ethics. Moral value. Who among the following was not associated with the extremist phase of the Congress? Extremist phase of Congress रे किए न थिले. गोपाल कृष्ण गोखले बाल 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 बरा. बाल बाल बाल. गोपाल कृष्ण गोखले मॉडरेट लीडर है तमने वो क्या करिवा तम समय दबा धीरे धीरे काम चालू मो हक हमको मिलिबो धैर्य धरिया पड़िबो ई प्रकार कथा मॉडरेट माने भाई साहब ना हाउ हमको जल्दी गोखले was the moderate leader which were the other three were the लाल बाल पाल tribe represent the extremist type अरविंद घोष भी थिले छाड़ देथिले पळेथिले तंत्र ना सुभाष चंद्र बोस स्लोगन तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा ये तो लिखा है सुभाष चंद्र बोस हाँ ये लिखा है बट तुम तो रक्त दियो मैं तुमको आजादी देव स्वाधीनता देव बोस gave his slogan during the World War II War II नहीं कथा motivate the Indian to join the IAS and fight the British rival ही पर asked India to qualify the ICS Indian Civil Service सत्येंद्रनाथ ठाकुर रविंद्रनाथ ठाकुर भाई भारी टफ कंपटीशन थिला कम एज रू परीक्षा होतला ये सब करथिला ସେମାନେ ସବୁ କରୁ Rabindranath Tagore brother of Rabindranath Tagore become the first Indian to join ICS ଥିଲା ଏଟା ସେଟା ଏବେ UPSC ହେଇଯାଇଛି ଯୋଉଟା କି ହାଇ ସ୍କୁଲ ତାପରେ ପଲିଟିରେ ମଧ୍ୟ Who was the president of the Lahore session of the Indian National Congress when the Purna Swaraj was declared? महात्मा गांधी गांधी नहीं नेहरू 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 भाई साहब Purna Swaraj Nehru has presided over the 1929 Lahore session और माने पाकिस्तान जे बट एबे सेटा इंडिया थिला ना सेटा भाबियो इतिहास पढ़ियो ना इंडिया पाकिस्तान सेपरेट भाबियो नहीं नथिला ना इंडिया इंडिया रा पाकिस्तान रा इंडिया complete the independence was adopted in the goal of the Congress. Hunter Commission. Hunter Commission was appointed to investigate. Yeah. Jallianwala Bagh. हाँ. Jallianwala Bagh. Hunter Commission was set up to investigate the massacre at Jallianwala Bagh. John Dyer. इन मारथिला कौन करथिला वगैरह वगैरह. उधम सिंह. यही भाई साहब खतरनाक सेठ मारी गया सला मारी होतो ना देख कौन करतो जयपुर पार्टीशन ऑफ द बेंगल वाज एन्युअल माने जोड़ीबा पुनी दैट माने भांगी जिबा एन्युअल माने जोड़ीबा सरकार सर इस बात से दिल्ली पळेले कैपिटल लोग धरिक उठी तो पळेले जोड़ीले तो कहला भाई आ सब संभाळियो एटा भारी चोर लोक थिले चोर माने पॉजिटिव सेंस नु बाकू किसी मान पई चोर तां मारिबा धमकेबा ग्रुप बनेबा एमिति सब कथा हवा ई प्रकार सब काम बेंगली मानकर अधिकार एटा ही एक्चुअली पॉजिटिव जिंस देइथिला ब्रिटिश मानु डरेया पई ताप नथिला पॉजिटिव सेंस बट decision was annual partition of Bengal was announced during the Delhi Darbar ଆସିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାର ହେଲା ଏଠି ମରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଦରବାର ହଉଛି ରାଣୀ ପ୍ରସାଦ ହଉଛି okay who established the Banaras Hindu University BHU Banaras निवेशन मदन मोहन मालवीय हाँ BHU Banaras Hindu University was founded by the Madan Mohan Malviya 1916 to promote the modern education alongside Indian culture.
Which nationalist leader is known as father of Indian unrest? Father of unrest माने शांति रखे दबनी ब्रिटिशर्स मानू. Father of Indian unrest. ग्रुप बनैबो ब्रिटिश के अगेंस्ट स्वतंत्र रचिबो तांग मारिया पे प्लान हबो कि सुभाष चंद्र बोस गंगाधर तिलक भाई हम कोन नते सिटी खतरनाक लीडर थे रखे देबेन ब्रिटिशर्स. तिलक नगर गोटे अच्छे दिल्ली रे बट तिलक जनरली ये सेठू बैरू महाराष्ट्र में गणेश पूजा करी बाकी सब जिनस ओके. तिलक गंगाधर तिलक British official, Valentine's was called Tilak is the father of Indian nationality due to radical nationalism stance. Radical, खतरनाक भाई साहब. तो देखो अंग्रेज को मारो पिटो मारो तांग अगेंस्ट सब ये लोग. Last woman president Indian National Congress. Sarojini Naidu अतर पढ़ो मुझे ना कंफ्यूज करने पिला ये मैडम एनिमेशन हाँ पिंपल सर है केटा एनिमेशन कौन पाई देखो से जो मैडम कहले से एक्चुअली ठीक भाभी कहले जे बट सरोजिनी नायडू जे फर्स्ट इंडियन वुमेन कथा लिखाई था इंडियन ओरिजिन वुमेन ये सरोजिनी नायडू. एनिमेशन नॉट इंडियन ओरिजिन बाहर थे से महिला थे हाँ से कथा कहूँ फास्ट वुमेन एड लिखाई फास्ट इंडियन वुमेन लिखा हे इंडियन ओरिजिन वुमेन या फिर इंडियन वुमेन ये लिख सरोजिनी नायडू तो खाली लिखाई वुमेन बोली देन अन्वेषण लिख अन्वेषण द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट आई being the first non-Indian to hold the Indian लगा सर एनिमेशन को बाहर है माने बाहर आस्ते हाँ से आयरलैंड रो आस्ते तांकर चली भारी भल लोक जानी मदर टेरेसा देखुन ना से बड़ा भल लोक थे तांकर सेठ सब ठीक ठाक थिला सी अलग किसी काम आसते बट ये देखले भाई साहब मोर तो सेठी ठीक ठाक कौन से लोक आसी कौन ये एमती शासन कर लोक से बट सी आसी ये देखला कौन ये शासन कर तो भल लगुन आक लोक कहला कि भाई साहब ना तुम ठीक ठाक रहा दरकार तुम कौन एमती आम सब ठीक ठाक अच्छे तुम कौन ये शासन करपट सेपट कर सी आसी रही सब जिन ये कले क्वेश्चन आस्थिला which of the following groups was formed in India by animation हाँ एबे तो कहले रिसेंटली ओ which organization formed by the animation ऑल इंडिया रे चलथिला जोटा कथा एलिवेशन और तिलक मिसी करथिले कोन करथिले बाबू कंट्रोल लीग कोनटा कंट्रोल लीग हां नहीं सर सेटा ग्रुप मो सर सेटा ग्रुप कथा कोच सर सेटा से पढ़िथिला ओटा क्वेश्चन नेबे असिस्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफिसर रे अच्छा which of the following groups was formed in India by animation ओ ग्रुप फॉर्म करा हेतला एनिमेशन को द्वारा नहीं हां आज्ञा चलो आंसर कोन थिला ना भला माने अछि ना आंसर तो नहीं सर से माने आंसर तो मु जानि पनी किंतु सर थिला सर ऑप्शन थिला द सिस्टर्स ऑफ इंडिया द ब्रदर्स ऑफ इंडिया द लेडीज ऑफ इंडिया द वैनिटी ऑफ इंडिया टिके मते टिके खाली चेक करे पड़ो अदरवाइज यदि काहू जणा आसी ताले को ब्रदर्स ऑफ इंडिया ना सिस्टर्स ऑफ इंडिया भीतर कोन अछि की आंसर कोन देखि चेक करछ ना कोन नथिले चलो मु तो खोजिले किंतु पाउनी किंतु चलो बता ठीक है पठे दबो देखि पठे दे व्हाट्सएप रे पठे दबो दे then which event marked the end of the Gandhi Irwin Pact which event marked the end of the Gandhi Irwin Pact second round of the conference kata ko aji hela Gandhi Irwin Pact Gandhi attended the second round of conference 1931 the part of the pact but failure lead due to renewal of the civil disobedience movement. Young Bengal movement was led by Henry Bibad, Derizu was the radical teacher in the Hindu college, Calcutta, led by the Young Bengal movement promoting the nationalism and freedom party. Aligarh, movement was initiated by
Syed Ahmad Khan. Syed Ahmad Khan, Sir Ahmad Khan started the Aligarh movement to promote the Western style education among the Indian Muslim, laying the foundation of the Muslim awakening in the India. जोटा कि एबे कहउछ कन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU सर अहमद खान सैयद अहमद खान अंडर क्वेश्चन पकउ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मदन मोहन मालवीय. Indian Council Act 1861 is the significant because Indian Council Act 1861 significant काहेकि करउछि. B. Indian were the associated in the legislation in the first time. तामाने ब्रिटिश जो गवर्नमेंट अंडर रे भारतीय मानकु लॉ बनेवा पई किछि जिंस पावर मिलिला स्टार्टिंग रे एति पई एटा सिग्निफिकेंट कथा. Indian were associated with the legislation in the first time. 1861 the act allowed the viceroy to nominate Indian to his expanded legislative council. Legislative council कौन केमिति के जन वगैरह थिले सेटा हम पढियो सिटी introducing Indian to the law making. भारतीय मानको लॉ बनेवा रे सेटा एक्चुअली एमिति हला बट एकदम एब्सोल्यूट नो अल्प किछि पावर थिला बट हाले स्टार्टिंग कर. The first organized revolt against the British rule was revolt of 1885 माने 1857 कथा के एनालिसिस कले हबो ता पूर्व एक्चुअली हेइथिला उटा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइज बट काम देई पा नथला ना एते नै वेलुर म्यूटिनी कथा. वेलुर म्यूटिनी 1806 was the first large scale rebellion against the British predating the 1857 revolt. ये हला परे उनको ये हबार साहाଯ୍य करितला. ता पूर्व कथा कोनी कहि परिबा कि काइक रिबेलियन कथा मध्य आमे कहि परिबा. या पर कथा बट हालांकि ये जिंस मेंशन करा है वेलुर म्यूटिंग. तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 was passed by vernacular. Okay? Lord Lytton. This act curbed the freedom of the Indian language newspaper. It was the representative and discriminatory. Repressive माने ये कर दबा दबाई दबा. Discriminatory माने नियमितता से बढिया कथा. Lord Lytton who was the founder of Arya Samaj. एजिटा कहिथिले से दिन आर्य समाज दयानंद सरस्वती आर्य समाज राजा राम मोहन राय के हाँ न कहिथिला आज भूली गेलै जो दयानंद सरस्वती फाउंडेड आर्य समाज 1875 to promote the Vedic value and the reform Hinduism. मते एजिटा पढा को विवाह यो कोन हमर विधवा विवाह विडो रिमेरेज. Lord Dalhousie, Lord Canning. The act was championed by the ईश्वर चंद्र विद्यासागर. ये सेंस बहुत काम करथि विद्यासागर भारी भल लोग जण हैला बुझले विद्यासागर एंड पास अंडर द लॉर्ड कैनिंग टू प्रमोट द विडो रिमेरेज. विवाह हमर ये विधवा विवाह से विद्यासागर आनथिले बाल्य विवाह नो बाल्य विवाह तो छोट पिला बाहा विधवा विवाह. Who was the editor of the journal New India? New India. एमती क्वेश्चन एक्चुअली पकोई पड़े. लाला लाजपत राय नो आनी बेसांत. आनी बेसांत ऊपर क्वेश्चन पकोई जी. Was the editor of the journal New India. New India रा आनी बेसांत थे editor. New India was the daily newspaper started the animation to prove the promote the home rule and social reform. In which year did the British Crown assume direct control over India?
से भलसे आंसर देखिबो रिज्यूम 58 हाँ 58 18 ହେଲା ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ 18 ଇଏ ହେଲା। After the revolt of the 57, British Parliament passed the Government of India Act 1858 ending the company rule and starting crown rule. पहला कंपनी रूल डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल अंडर ଆସିଲା ଭାରତ କ୍ରାउन रूल। Objective resolution was introduced the Constituent Assembly by तम प्रिएम्बल कहूछ ଏବେ आगुरु ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हिसाब रे पास हो जाइतिला ऑलरेडी इंटरनेशनल जवाहरलाल नेहरू करे which of which revolutionary was associated with the assassination of the Colonel Sanders को किए मारते थे भाई assassination कर देले ताको गुरु भगत सिंह सुखदेव 3 जन जाके मिसी कर देले ताको मैं फांसी दिया हला भगत सिंह राजगुरु सुखदेव was all involved in the killing of the Sander in 1928 revenge of the लाला लाजपत राय लाठी से बाड़ी मान दे रागी की 3 जन भाई साहब तो खतरनाक काम कर who founded the Ramakrishna mission जी स्वामी विवेकानंद फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन या फिर रामकृष्ण मठ 1897 to carry out the social and religious reform inspired by the Guru and Ramakrishna Paramahansa. UPSC रे लॉन्ग क्वेश्चन ले पकोची कोड फोटोडा मन रखा पड़तो एथिक्स रे जिंस पढ़ा हबो जोटे कि समस्त लोकनकर कोड फोट में कोन कहितले को जिंस टू रिमेंबर सोक्रेटिस हे गेले विवेकानंद हे गेले रिसेंटली जब अब्दुल कलाम नहीं परिबो गांधी सुभाष which congress session saw the split between moderate and extreme सूरत के मसीहा दीटा लखा सूरत से इतना जानी 1905 सात आगे फिंगंद सूरत स्प्लिट को जाते हां कोन ऐसे सात the split occur सूरत स्प्लिट सूरत सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस ओवर द आइडियोलॉजिकल लीडरशिप डिफरेंस ऐसा कहले ना हम मानिबनी एका दिन हम रही परिबनी से लाइन चीज धीरे धीरे हम जीवा पड़े ऐसा कुछ मत who founded the Indian Association 1876 Indian Association सुरेंद्र भाई साहब है बालाजी इंडियन एसोसिएशन 1877 इंडियन एसोसिएशन the precursor of the Indian National Congress was founded by the Surendranath Banerjee mobilized the Indian political लगा था पढ़ी जाएगी एक्चुअली इंडियन नेशनल कांग्रेस सुरेंद्रनाथ बानर्जी क्वेश्चन इंपोर्टेंट पॉलिटिकल एंगल ले देखियो कोडा क्वेश्चन इंपोर्टेंट the phrase no satyameva jayate is taken from which ancient Indian scripture एटा तरह कौन बनेगा करोड़पति हाँ कौन बनेगा करोड़पति पचार तो नहीं कुछ कैसे पढ़ले एक्चुअल कौन बनेगा करोड़पति पाई जो करोड़पति ही जो तो मंडक उपनिषद में जयते मीनिंग द ट्रूथ एलोन द ट्रुथ माने सत्य रे ही विजय हबो से में जयते माने सत्य रे ही विजय सब तो कहले मैं भी किसी दिन तमे ला ही जाई पर बॉडी बिल्डिंग बैक शो कर दे पर बट वो हम सत्यता ही टेकन फ्रॉम द मंडक उपनिषद इंस्क्राइब्ड इन बिटवीन द नेशनल which governor general associated with the abolition of the sati कथा को abolition लॉर्ड बेंटिक सतीदाह प्रथा सतीदाह माने सब ले दोले या फिर विभिन्न प्रकार always not meaning जला हवा एक्चुअल मिसकंसेप्शन अछि सब माने ता नियर पकी जला
माने समथिंग डिफरेंट टाइप रो कांसेप्ट थिला बळे देवा कथाटा 100% ठीक है पेंटिंग द एबोलिशन ऑफ सत्यवाद लेजिस्लेटर 1819 led by the Lord William Bentinck supported to the राजा राममोहन राय विदाह प्रचंद्र विद्यासागर to remarriage. Which revolutionary group was associated with the Ghadar movement? Ghadar Party. Ghadar Party. Very good. Ghadar Party was formed in the Indian, expatriate in the USA and Canada in the 1913 to liberate the India through the arms struggle. Who founded the Theosophical Society in the USA? USA Theosophical Society, not India. In 1875. Swami Vivekananda. Swami Vivekananda भाबा उठिके हाँ मैडम बालावाक्षी एंड कॉलोनियल ऑटलुट्स उन लोगों ने ना फॉरेन में टिपिकल सोसाइटी टिपिकल सोसाइटी was founded in the New York 1860 and later shifted to India. Animation popularized it in India. लगा था around 40. Who was the first Muslim president in the Indian National Congress? ना Mohammad Ali Jawad. मोहम्मद अली ना बराबुद्दीन त्याबजी became the third president of INC 1887 and the first Muslim to hold the post. Then Congress Socialist Party was founded in Congress Socialist Party. 1934 कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फॉर 1934 आचार्य चंद्र देव एंड जयप्रकाश नारायण गवर्नमेंट अछि पर मन रखो कांग्रेस ई जनरली कांग्रेस पार्टी अगेंस्ट ए जिंस बने लिस्ट बस विद इन द कांग्रेस इस भीतर इस जिंस कोठी ना कोठी कारण 1934 कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी रौलट एक्ट 1919 is known as ब्लैक संविधान दिवस है ब्लैक एक्ट रौलट एक्ट allowed detention without a trial was widely condemned निंदा गांधी proposed it with a nationwide हड़ताल बिना किसी कहिकी रखा जेल कैबिनेट मध्य कर रौलट एक्ट ब्लैक एक्ट Indian National Army trials were held in William na Redford. DNA trial were held in the Redford 1945-46 where the officer like the Shahbaz Khan and Sagal Gurbar were tried to the trains. Nehru report was prepared under the chairmanship of Nehru report. दी जन करथिबे के जने मोती मोतियाबू करथिबे मोतीलाल ठीक है हां मोतिया बिंदु वाला कर नेहरू बापू अछि पो केम कर दो नेहरू रिपोर्ट वाज फर्स्ट इंडियन अटेम्प्ट टू ड्राफ्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन से कोई थे ना ब्रिटिश माने कि भाई हम करी देखाओ तमरा कोन कॉन्स्टिट्यूशन कर पिले लाल कहले कोन कथा कहू हम कर पिले चलो देखो बनौछि के जबरदस्त बढ़िया बनै थिले हालांकि मिसामिसी करथिले बट स्टिल बनै देथिले बढ़िया he rejected separate electoral and proposed the dominant status to माना करथिले dominant status idea of the satyagraha was first experimented by the Gandhi in the India Uti so चंपारण सत्याग्रह फास्ट थिला ना गांधी का एक चंपारण ले बिहार
start କରିଥିଲେ ଆଗ୍ରହ କେମିତି ଆଗ୍ରହ 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 ମିନିଂ ଉପରେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟ ପଢିବା ଅଛି ଆଗ୍ରହର ମିନିଂ ନନ୍ କୋଅପରେସନ ମିନିଂ ନନ୍ ଭାয়োଲେଣ୍ଟ ମିନିଂ ଗାନ୍ଧୀ the first youth satyagraha in India during the campaign agitation 1917 against the Nikatiya system. Who among the following set up the Azad Hind Fauj? Azad Hind Fauj. रासबिहारी बोस रासबिहारी बोस first. करथिले आजाद हिंद फौज तापर लेटर भाई साहब लेके चले दिले काम रासबिहारी बोस एस्टैब्लिश द इंडियन नेशनल आर्मी 1942 later it was reorganized and led by the Subhash Chandra Bose then with the hint कि आसीबो भूल करके आसीबो नहीं पढ़े देला आपन ठीक करी All India Muslim League was found in All India Muslim League 1906 1906. देखिले ऑलरेडी बेंगल पार्टीशन हैला बेंगल पार्टीशन सेपरेट बसले लेकिन तो काम करिवे ना काम कले आ कर देले The term drain of wealth was first used by Minority. दादाभाई नरवणे यूज करथिले ताको ये करथिले आसे दत्ता ये बस एक्सप्लेन करथिले यूज करथिले दादाभाई नरवणे आसे दत्ता एक्सपैंड करथिले क्वेश्चन मीनिंग अछि ता मीनिंग पढी बिल्कुल लॉजिकली क्वेश्चन लिखियो कॉन्फिडेंसली पढी असुविधा नहीं पढिबो दे दिन कि तो मन रखियो प्रैक्टिस करियो कॉन्फिडेंटली करियो ओके INA flag was hosted in the Indian soil for the first time in Andaman Island. Andaman Island. very good Subhash Chandra Bose hosted उत्तोलन करिवा ट्राइकल तिरंगा पोर्ट ब्लेयर दिसंबर 1943 सिंबॉलिकली क्लेमिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस बस घोषणा कर देथिले भाई साहब भारत जोड़ जीवा था जा फर्स्ट ऑफर वाज मेड बाय फर्स्ट ऑफर कि देथिले फर्स्ट मसला स्लैश ऑफर मैनली महात्मा लॉर्ड लिलिंगो फर्स्ट ऑफर 1940 promised dominion status after war expanded executive council but was rejected by the Congress अरे बाहर में जाए अभी चाहिए तो लड़ाई लो किसी नहीं विषय लड़ाई हो तापर कौन लॉलीपॉप दो ओके इंडिया नेशनल कांग्रेस adopted क्विट इंडिया resolution 8 इंडिया भारत छोड़ो मुंबई स्टॉक मार्केट वाला बॉम्बे क्विट इंडिया रिजोल्यूशन फास्ट हितला बॉम्बे रे क्विट इंडिया बॉम्बे क्विट इंडिया रिजोल्यूशन पास्ड बाय द बॉम्बे सेशन इंडिया कांग्रेस कमिटी 8 अगस्त 1942 कॉलिंग फॉर द इमीडिएट ब्रिटिश विड्रॉल जल्दी भागो भाई साहब लगाए मेन नेम ऑफ द वहाबी मूवमेंट वाज revive the Islam in its pure form. Revive Islam in the pure form. कहले बाबू नाटा कोन Subadarsan forward. The Wahhabi movement led by the Syed Ahmed of the Raebareli aimed to purify Islam and the latter took the political dimension of the British. बनी थिला कोन पे Wahhabi movement में साहाय्य करिया फ्लिपमेंट तापर पॉलिटिकल Who started the newspaper Hindu Patriot? Hindu Patriot. माने देशभक्ति Amish Chandra Mukherjee he used Hindu Patriot to expose the indigo planters and criticize the British policy during the 1850. Lucknow Pact 1916 was agreement between Congress and All India Muslim League. Lucknow Pact was the political understanding between the INC and Muslim League to present joint demand up to the British.
मिसिक आमे उड़ी जाइथिले एठी हु वाज द वाइसरॉय ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ द बंगाल जीटा हां कर्ज करथिले ना कर्ज करथिले से पार्टीशन करा हला हेड एंड रूल पॉलिसी Congress declared Purna Swaraj complete independence and its goal in which second which session Purna Swaraj ଏବେ ତ କହିଥିଲି क्वेश्चन रिपीट है टिके कथा लेखा हला उल्टा जवाहरलाल नेहरू है कहते आम ऐसा हो सारी तुम जहाँ करा से कन्स्टिट्यूशन जो आडप्ट करा से दिन करा 20 जनवरी जो कन्स्टिट्यूशन आम आडप्ट करा जिनस करा क्वेश्चन सरा से डिक्लेयर होता आगुरी किसी दिन आगुरी कन्स्टिट्यूशन रेडी बना रेडी ना आम कराने आराम से बसवा कितने दिन चुपचाप से डेट आसले आम संविधान को पालन कर was the last Governor General of independent India. Last Governor General. Lord Mountbatten. P. Raja Gopalachari. Last Governor General, independent India. Independent India. Independent, not dependent. After Mountbatten, Raja Gopalachari became the first and only Indian Governor General serving till the 1950s. କଥା ମ୍ୟାଡାମ ଯିଏ କହୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମନେ ରଖିବାକୁ Okay. Indian National Congress was formed with the help of very good. कौचो को परीक्षा ठीक मार देले क्वेश्चन मिल जी Civil disobedience movement was formed. Withdraw in करा बाबू 34 After the phase of the suspension and renewal, the civil disobedience movement was officially withdrawn by the Gandhi in April 1930. Officially withdrawn. Who was the founder of the Servant of the People Society? Servant of the People Society. Lala Lajpat Rai. Sardar Lala Lajpat Rai. Who said, "Give me blood, I will give you freedom"? हिंदी इंग्लिश दी तरह रहेगा नहीं आप मुझे खून दो मैं आपको आजादी दूंगा एटा सेटा इंग्लिश रे लिखा है लाइन गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम है ताको मत ओडिया रे आउट हम कर दवा ते तमे रक्त दे मु तुमको आजादी देबी आजादी ना कोन स्वाधीन देबी प्रकार भाषा रे लागो हु रोड द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू Gandhi Irwin Pact was signed in the context of the Irwin Pact कौन पाइन civil disobedience में तो अलग करो बड़ा क्वेश्चन करा ला इनडायरेक्टली civil disobedience चलता है गांधी बार गांधी गले Communal Award was announced by Communal Award McDonald pizza burger McDonald British PM Ramsay MacDonald announced the communal order granting the separate electorate to minority including the Dalit most thing नहीं जब बस the Indian struggle was written by Indian struggle Babu his autobiography was both outlined the freedom movement and his own ideology journey struggle was the known as Lokhitwadi Pal Hari Deshmukh noted social reformer from Maharashtra he wrote under pen name Luthiwada promote the progressive ideas Jyotibai Phule education upre mention kara tha
The first Factory Act British India was enacted in 1881। ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା କହିଦେଲେ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭଲ ୱାର୍ଡ ଦେଖାଲା ଠିକ ଅଛି ଲଜିକ ପକେଇବ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆକ୍ଟ କଥା ଲେଖା ହଉଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କଥା ମେନସନ କରା ହଉଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କାଉଣ୍ଟର ଆସିବ କଥା ଭାଇ ଠିକ ଅଛି ଲେଖା ଅଛି Factory Act is the aim to improve the working conditions, especially for the women and children in the industry. That is the Factory Act. Background रे କଥା ଅଛି। Who gave the call for Swaraj? Call for Swaraj in 1 year. Suman Khan. महात्मा गांधी During the launch of the non-cooperation movement, ହେଲା 1 year କହିବାକୁ ମତେ ସମୟ ଦିଅ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ତମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣି ଦଉଛି। ଦିନ ବାପା ମାଙ୍କୁ କମିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛ ନା ମତେ ବାପା ବର୍ଷ ସମୟ ଦିଅ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଆଇଏଏସ ଲିଷ୍ଟ ବାହାର କରି ଦେଖୁଛି ମନଟା ଗାନ୍ଧୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଦେଶ ଆଜାଦି କରି ଦେଶ ଦେଲେ ଗାନ୍ଧୀ ନା କରିଦେ Term economic drain become the popular due to poverty and unemployment दादा ये बुक ହେଲା मेंशन କରାହେଲା ସେଥିରେ started the self respect movement self respect B.R. Ambedkar Periyar E.V. Ramaswamy in Tamil Nadu movement in Tamil Nadu The idea of separate Pakistan was first officially demanded and all say 40 है कुछ नहीं 40 Muslim League passed the Lahore Resolution March 40 demanding separate Muslim homeland Who founded the Indian Mirror newspaper? Newspaper पर क्वेश्चन पकोछि फ्रीडम प्रेस ऊपर क्वेश्चन पकोछि भक्ति मूवमेंट सूफी मूवमेंट हां केशव चंद्र सेन मूवमेंट सूफी मूवमेंट आप क्वेश्चन पको Mountbatten plan become the basis for what? Is it a cabinet देखो Mountbatten plan राउथर देखि दियो मिल जिवो partition very good हला चलो रखिले